Azam and Rizwan, of course, both of them. Even today, it felt like Babar was pretty much there in the opening partnership because Saim got out early. But a good start because now they're making those key changes at the top, Erin. Yeah, absolutely. I think it was a wonderful performance by the men in green. I can't imagine the pressure that they felt on their shoulders after the last two games. So to get the win was the most important thing. They did it in pretty quick, emphatic style, which is also very important. And, you know, it is all about momentum, this format of the game. And now they have the right kind of momentum going in the right kind of direction. There was some changes throughout the lineup. They're trying to do something different. It worked today. And credit to Saim Ayub as well, because it was, the intent was there. The scoring shots were on, perhaps on a different outfield as well, where the ball didn't plug. Some of those twos might have gone for fours. And especially that right-left combination was also there. So that's kind of, you know, that intention and moment, you know, sometimes works for you. Absolutely. Right, we can't wait to see what Pakistan do next with this line. Can't say just yet. It's too Say far it. out. Just say it. Just say it. Just keeping the suspense alive. I can't. Well, it was a wonderful win, which was set up front by the bowlers. Babar Azam winning the toss, electing to bowl first. Let's relive the wickets that were taken, which was wonderful work by the Pacers up front with the new ball. Shoaib, we're going to have a little look at the overlay here. And Amir on song once again, player of the match for him. 100%. Right on the money. Experienced fast bowler, making a comeback, leaving his mark. And that was the perfect length for Mr. Shaheen Shah. Because, you know, it's right on the money. Again, that is a turning point for Curtin. That would have been different. You see, there is a bounce there. He threw off the stump and he getting some wickets. And that was... A boundary was taken off every single over. Those 4 overs that Pakistan have bowled, and they'll be aware of that, and they'll want to rectify that for the next game. But as a bowling unit, you can't afford to do that against the better teams. They'll just hurt you too much, and they got away with it. I mean, Shaheen went for 10 off his first over and 11 off his next 3, so pulled it back really nicely. But the first wicket of Dalwal, he was just set up beautifully by Amir. He went 4 balls across, swung one back in, almost got through, and then the next ball back through again and got through him. He just set him up perfectly. Perfect fast bowler's wicket, wasn't it, Shoaib? The ability to course correct, I think, was most impressive by Pakistan today. When things went a little bit wayward, they managed to steer it back on course, Roha, and, you know, get the job done. So big, important improvement from everyone with the bowling unit also. But I think credit to the way Canada started their innings. You know, that first over Shaheen का हमने देखा, Yunus, Aaron Johnson, इनके बारे में बड़ी बात हुई before the World Cup, बहुत बस थी because ये भी जमैका से originally हैं, and जिस तरह उन्होंने आज टैकल किया शाहीन को आते साथ ही, his 52 of 44 was really the only thing that worked for Canada today with the bat. आपको इनकी innings देख के जो है वो क्या कहेंगे आगे इनका फ्यूचर कैसा है, बिकॉज फ्रेंचाइज के जो स्काउट्स हैं वो इस वक्त बहुत केयरफुली फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप। ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, और मेरे ख्याल से जिस तरह वो खेले हैं, अपनी उन्होंने टेक्निक शो की है, स्किल शो की है ऐसी पिच पे ऐसे बॉलिंग के खिलाफ, तो उनकी बैटिंग देखे वो बिल्कुल क्लियर थे। एक अच्छी बात उनकी बैटिंग में देखेंगे, जो भी बिग शॉट्स खेल रहे हैं वो फुल फेस ऑफ द बैट खेल रहे हैं। ये देखें, देखिए बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी ने बैक टू बैक इन स्विंग करने की कोशिश की, फुल लेंथ, और उनको उन्होंने फोल लिया। और फिर ये देखें कि जहाँ उनको बॉल मिला, उन्होंने ऐसा नहीं है कि क्रॉस बैटेड शॉट भी हैं, लेकिन ये देखें बिल्कुल फुल फेस ऑफ द बैट, उनको पता था, उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, जिस तरह वो उनकी बिल्ट है। ये देखें, और ख़ास तौर पर ये स्पेशल शॉट था। अच्छा, हम ये समझ रहे कि शायद ये गली के ऊपर से जाएगा, लेकिन ये फ्रंट ऑफ पॉइंट जो है ना, ये 6 रन थे, और ख़ास तौर पर इस तरह ये शॉट देखें। स्लार विकेट लॉस्ट किए हैं 47 रन्स पे, जो कि 7 से 15 ओवर के हम एक जो फेज़ कहते हैं, और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ 55 रन्स हैं और 1 आउट है। तो ये मिडिल फेज़ जहाँ भी आता है, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, तो इसी में ही कहीं या तो आप आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाओ। फिर जब रिकवरी पे आते हैं, क्योंकि देखिए रिकवरी का टाइम होता नहीं है T20 क्रिकेट में, तो मेक श्योर करें कि आप जब आप आते हो पावर प्ले से, और फिर जब आप ये 7 से 14-15 ओवर तक आते हैं, तो यही बहुत मेन क्रूशल एक फेज़ है आपकी इनिंग का, जिसको आप विन करते हो तो आप अच्छे शेप में रहते हो मैच में। बिल्कुल हफीज़, रिकवरी की क्योंकि यूनुस बात कर रहे हैं, रिकवरी नज़र नहीं आई कनाडा की तरफ से। विद द बैट 43 for 3 थे ये, और जब आउट हुए निकोलस कर्टन, और पिछले मैच में भी नंबर 5 और 6 के बैटर्स जो थे, कर्टन और श्रेयस मोवा, इनकी ही पार्टनरशिप थी। नॉट मच कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दैट बैटिंग ऑर्डर, बट व्हाट विल यू से, बिकॉज ऑफ कोर्स द कैप्टन हिमसेल्फ सेट के 25-30 रन शॉर्ट थे, बट अ गुड बैटिंग एफर्ट फ्रॉम एरन जॉनसन। देखें, अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने उनको आउट क्लास किया,
राइट एरिया में हिट किया, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में वो सारे स्किल्स मौजूद हैं कि वो थ्रेट कर सकते हैं किसी भी बैटिंग लाइनअप को। वहाँ पे एरन जॉन्स की एक इनिंग्स ने उनको होप दी कि दे कैन गेट दैट 120 या 130, लेकिन उनके आउट होने के बाद या जो दो मेन प्लेयर थे जो परफॉर्म कर रहे थे, कर्टन और मोवा, वो दोनों आउट हो चुके हुए थे। तो अब किसी और को स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना था जो वो नहीं दे सके। तो हमने, मेरा अपना ख्याल ये है कि दे शुड बी हैप्पी फ्रॉम द परफॉर्मेंस सोफा। कनाडा की अगर उनकी बैटिंग इस पिच पे मैं देखूं, इस पिच पे भी 100+ रन्स करना पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ, उनको अपनी परफॉर्मेंस पे खुश होना चाहिए। ठीक है, यू ऑलवेज वांटेड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो वो ज़रूर होगा, लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे वो फंसे हुए थे, 5 आउट हो गए थे 60 समथिंग के ऊपर, वहाँ से ये एक रिकवरी लेके आना, वहाँ से ये सारी जो 100+ रन्स करके थोड़ा पाकिस्तान को चैलेंज करना, दे शुड टेक अ मॉरल विक्ट्री, आई बिलीव। Right, some positives for Canada with the bat, Aaron, but they will be pleased with how Aaron Johnson took charge. But of course, not much of contribution from their in-form batters today. I think it was lucky for Pakistan that Nicholas Curtin got run out when he did, because we know how damaging he can be. He was definitely one to watch for them today. But milestones fell, as with every T20 World Cup, it seems, at the moment. But one in particular we have to pay mention to is Haris Rauf. He becomes the fastest pacer in the history of the format to make it. Shoaib, I remember hosting a big bash game where he was player of the match. He took a 5 for only, it seems, a few years ago. Now this rise to stardom. He overtakes the rest of the list there, the third ever quickest to get to 100 wickets in the format, sitting behind two spinners and Rashid Khan and Wanindu Hasaranga. Where is the ceiling for Haris Rauf? How far can he go? I mean, he came out from nowhere. Credit goes to Lord Clunder to pick that kind of a talent and scouted that kind of talent out of the literally streets of Pindi. He comes from Pindi. That's why he's extraordinary. He's not normal. So, with you as an idol, no doubt. Was it any wonder? So I need a bit of a flavor, guys. You're too serious. We won the game today, for heaven's sake. So I think this guy loves playing this kind of format. He enjoys that. Unfortunately, he just cannot find his length. You know, his areas to hit, it's like in the stumps, basically. So here he gets the bounce, you know. I mean, it's a lucky breakthrough that what he needed for. And I mean, this is Haris Rauf. You know, skid through off the stumps. So congratulations to him. I think he's done a wonderful job. The captain's happy with him. That is the most important thing. The captain talks way too much with him. Yeah. But initially, one thing I just want to say before we move on from Haris Rauf, though, there should be a separate list which includes broken front toes from batters, because in this room alone, he's broken my husband Ben Cutting's big toe, he's broken Marty Guptill's big toe. Those toe crushes at 150 clicks an hour. Just describe for the audience, Marty, what it feels like when Haris Rauf is on song and you get a beamer at 150 on that big toe. It's still black. Much fun, and it hurts. And then you've got to try and play the rest of the tournament with a broken toe. So we don't want them to know you got a broken toe because you want to play. Well, they knew I did. The doctor said there's no point in getting an X-ray because it was just going to tell us it's broken. So and how broken was it on that X-ray? It chipped the end of my toe off. Yeah. So should have an injection to get through. You don't have you don't have a kind of a luck with your toes, don't you? Well, it was that foot as well. So I only had one good toe on that foot. And the thing is being a bowler, Ben's forever had a black front toe from that toe hitting the shoe. And I was like, oh, babe, you know, the toe's looking pretty. He goes, no. He said, that's the wrong foot. That's Haris Rauf. I was like, oh, okay. Shame. 2 black feet. Little bit of on a lighter note, Haris Rauf, we see him taking wickets in, the invite ball format, and we've seen jab se unka career shuru hua hai, he hasn't stuck to one single celebration. Of like that airplane, and we saw Shoaib Akhtar just flying through the ground. He had to change a bit of his celebrations. शुरू में उनकी कुछ controversial सी भी हुई जिसपे वो खुश नहीं थे, लोग खुश नहीं थे. But how important is a celebration for a fast bowler? Celebration needs to come out naturally rather than has to be manifested. You see, when you take a wicket, when the ball hits the stumps, that sound actually gives us the pleasure that you can't even imagine. So we just glide through with that kind of a pleasure, you know, when we get this, when we're knocking somebody out, it's not a fun, but hitting the stump is something else. Haris, the biggest strength for him is to take wickets. If he keeps on taking wickets, he becomes a better bowler. When he does not take wickets,
trust me, he's a very expensive fast bowler. So میرا خیال ہے کہ keep on taking wicket, have a bit of faith in him. He has a pace. When he's going to land in West Indies, I promise he'll be a different bowler altogether because he's going to reverse a bit. With the new ball, he'll be excellent. Well done to him. Congratulations. Keep it up. I think the other thing with Harris as well, we just got to remember that he's only just come back from a very serious shoulder injury as well. So he'll need the time under his belt, the game time to get back to his 100%. बॉल दे दें और आप बस एक कंडीशन में आपको उनको यूटिलाइज़ करना है. जो हमने पहले बात की कि आप बिल्कुल, जैसे शुएब ने यहाँ बात की कि तेज़ बॉल करें, लेकिन तेज़ बॉल कहाँ करें? अगर एक फास्ट बॉलर अपने एक्सप्रेस पेस से नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो हारिस रऊफ का भी यही है. अगर आप उनको कहेंगे कि बाउंसर ना करें, हार्ड लेंथ पे ना करें और आगे आगे बॉल करें तो मुश्किल हो जाता है ऐसे बॉलर्स के. तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना है. आपके बॉलिंग अटैक में, बॉलिंग बैटरी में एक होता है जो कि ड्रा के रखता है. अभी हमने नोकिया की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो आते हैं और बैंग 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 और उनको विकेट्स मिल रही होती हैं. तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट होता है. और मेरे ख्याल से अजहर महमूद वो फादर फिगर हो सकते हैं इनके लिए, इन बॉलर्स के लिए. नहीं बिल्कुल है, क्योंकि वो जो है वो उनकी जो कोई हमारे साथ बहुत खेले, उनकी मेंटालिटी थोड़ी चेंज है. वो चाहते हैं कि बेस्ट आपसे लें. और जिस तरह वो खुद टॉप की क्रिकेट खेले में, टॉप के ऑलराउंडर थे, दुनिया में लीग्स खेले हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस. तो मेरे ख्याल से वो जो हम एक बात करते हैं ना फादर फिगर्स को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बॉलर्स के पास तो एक फादर फिगर्स मौजूद है. जिस तरह अजहर महमूद का खुद एक करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है. वो अपने हम सबको पता है वो भी पिंडी से हैं. जी तो बस फिर आप समझिएगा वो पिंडी से है तो फिर कैसे होंगे, क्या करेक्टर होंगे. तो मेरे ख्याल से वो फादर फिगर मौजूद है. और उनके आने से, उनके एक्सपीरियंस आने से, क्योंकि वो सारे ख़ास तौर पे जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो सारी दुनिया में खेल चुके हैं, सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं. तो उनके लिए ये, इन बॉलर्स के लिए अच्छा है कि ये उनसे जो अपने कोच से कैसे सीखते हैं. The sky's the limit for the talent that is Haris Rauf. Congratulations, you get that title, the fastest pacer to 100 T20I wickets. Off to a very short break here on Vantage Developers.